Assalamu alaikum, you are watching Camcore with Nadia Tahir. Our today's topic is size exclusion chromatography. In this we will study what is size exclusion chromatography, what are the components of its system, its basic principle and applications. Size exclusion chromatography is a method in which molecules in solution are separated by their size और शेप एंड ज्योमेट्री। बेसिक जो पैरामीटर है वो साइज़ है। साइज़ की बेस पे मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है, सैंपल की सेपरेशन होती है। इसमें प्रिंसिपल क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्स ऑफ स्टेशनरी फेज। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज के पोर्स से बाहर रहते हैं। दे रिमेन आउटसाइड, they do not enter into the pores of stationary phase, while smaller molecules are able to enter and interact with the stationary phase. As a result, larger molecules elute first and smaller molecules elute later. मीन्स कि जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर बाहर से पास हो जाते हैं एंड दे आर एल्यूटेड अर्लियर, वाइल द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंटर द स्टेशनरी फेज पोर्स। जब वो पोर्स में एंटर हो जाते हैं देन दे हैव टू ट्रैवल मोर, दे गेट इन ट्रैप इन द पोर, दैट्स व्हाई दे आर एल्यूटेड later. This image will make the principle more clear. Here you can see the gray circles. They show the stationary phase beads or particles of stationary phase. These have white circles you see. These are basically the pores. इसमें जो पोर हैं वो डिफरेंट साइज के हैं, दे आर ऑफ स्मॉल एंड लार्जर साइज. These blue and red circles are our sample particles. सैंपल में अब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कुछ का साइज स्मॉलर है एंड सम आर ऑफ लार्जर साइज. Those with the larger size will pass from the outside. ये बाहर से ही गुजर जाएंगे. They will not enter these pores. ये इन pores में enter नहीं होंगे. While the smaller ones will enter the pores of stationary phase. Pore में enter हुआ, उसके अंदर ट्रैवल करेगा, then it will come out, then it will be entrapped in other pore, then it will be entered in the next pore. तो इस तरह से जो हमारे smaller molecules हैं they will keep on moving and they will travel more, while the larger molecules will come out of column earlier. Here you can see कि जो red है ये बाहर से ही move कर रहा है तो जल्दी travel कर लेता है. जो blue है वो एक pore में enter होगा, उससे बाहर आएगा तो next में enter होगा. इसी तरह से घूमता घूमता वो elute out होता है. That's why it take more time to come out of column. Next are the components of size exclusion chromatography. First one is stationary phase, then mobile phase, column, pump and detector. Sometime a display unit is counted as a separate component और sometime हम detector को ही display unit में भी count कर लेते हैं. तो basic जो components हैं वो ये 5 हैं. Now we will see detail of each component. Stationary phase. Stationary phase consists of porous materials. Usually it is gel or polymer matrix like agarose, Dextran and acrylamide. Porous material होगा, usually gel होती है या फिर कोई polymer होता है. Next, it is hydrophobic in nature. It is semi-permeable porous beads with well-defined range of pore size. जो स्टेशनरी फेज के बीड्स का पोर साइज है वो वेल डिफाइन होता है. ये नहीं कि रैंडम आप किसी भी साइज की ले लें, डिफरेंट साइज होते हैं, अपने सैंपल के अकॉर्डिंग हम पोर साइज चूज करते हैं. Next comes few more properties of stationary phase. It should be chemically inert, it should be inexpensive, it should not react with the components to be separated. अगर components के साथ react कर जाएगी तो हमारा sample destroy हो जाएगा, वो separate नहीं होगा. And it should not react with the eluent or mobile phase. It should be colorless, uniform in size and shape. इसके जो particles हैं
उनका साइज और शेप यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कलरलेस होनी चाहिए जो हमारी स्टेशनरी फेज है. इट शुड बी मैकेनिकली स्टेबल बिकॉज इट हैज़ टू बेयर द प्रेशर. Next is the mobile phase. The liquid that is used to dissolve the biomolecules or sample to make the mobile phase is usually called a buffer. साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज और बफर ये दोनों वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली यूज होंगे बिकॉज इसमें मोबाइल फेज की हम पीएच सेट कर लेते हैं. मोबाइल फेज हैज अ डेफिनेट पीएच. The most common elements are tetrahydrofuran, chloroform, dimethyl formamide. Okay, here comes a conceptual question. I said that mobile phase is called a buffer because we have a definite pH of the mobile phase. तो हमें definite pH की ज़रूरत क्यों होती है? Why we need a buffered mobile phase for size exclusion chromatography? You have to ponder on it. Think for 5 seconds. Why we need a buffered mobile phase for size exclusion chromatography? The answer is size exclusion chromatography में जो हमारा sample है that are biomolecules, mostly proteins होती हैं. तो जो biomolecules हैं they get degraded with changes in pH. जब pH change होती है तो वो degrade हो जाते हैं, maintain नहीं रख पाते अपने structure को. So in order to keep our sample intact we use a buffered mobile phase. Okay. नेक्स्ट आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मोबाइल फेज. क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मोबाइल फेज में? इट शुड डिजॉल्व द सैंपल कम्प्लीटली. सैंपल को कम्प्लीटली डिजॉल्व करे. इट शुडंट डिग्रेड द सैंपल ड्यूरिंग यूज. सैंपल डिग्रेड ना हो. एंड सॉल्वेंट मस्ट नॉट बी कोरोसिव टू एनी कंपोनेंट ऑफ द इक्विपमेंट. जो हमारा सेटअप है, इक्विपमेंट है, उसे कोरोजन कॉज ना करे मोबाइल फेज बिकॉज द होल सेटअप ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज रियली एक्सपेंसिव. तो उसकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर द मोबाइल फेज टू बी नॉट कोरोसिव टू एनी कंपोनेंट. देन केम द कॉलम्स. कॉलम जो है ये एक मेन पार्ट है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और ऑफ एनी क्रोमेटोग्राफी. इसमें डिफरेंट साइजेस के कॉलम प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. एनालिटिकल कॉलम वी हैव and we have preparative column. Analytical columns are of small size while preparative columns are of larger size comparatively. Usual length of these columns are from 25 to 60 cm. Minimum 25 cm का होता है और 60 cm तक जो है इन कॉलम की लेंथ हो सकती है. We choose column according to our requirement, our sample and the data we need from the experiment. We can use shorter columns to save time and solvent, but we should keep in view कि हम इतना short column ना ले लें कि separation हो ही ना. As we enter the sample it come out. तो sample को view में रखते हुए हमें column choose करना चाहिए, but shorter columns are preferred because they save time and solvent. नेक्स्ट कॉलम की पैकिंग है. जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो कॉलम में ही पैक होती है ना, तो उसकी पैकिंग स्टेशनरी फेज को कॉलम में अप्लाई करना दैट इज कॉल्ड कॉलम पैकिंग. स्मॉल साइज पैकिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज इट गिव बेटर रेजोल्यूशन. ये अच्छी रेजोल्यूशन देती है बट इट हैज़ अ प्रॉब्लम दैट इट गेट कंटेमिनेटेड वेरी इजीली. अब उसमें उसका साइज स्मॉल है तो वो कंटामिनेट भी इजीली हो जाएगी. सो द पार्टिकल साइज एंड द पोर साइज एंड इनफैक्ट द साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज, पार्टिकल का साइज स्टेशनरी फेज के और पार्टिकल में जो पोर साइज है, ऑल द थिंग्स आर सेलेक्टेड बेस्ड अपॉन द सैंपल साइज. हमारे सैंपल का क्या साइज है, किस सॉर्ट का, किस टाइप का सैंपल है एंड विच टाइप ऑफ रिजल्ट्स वी नीड. These are the few columns of the size exclusion chromatography. You can see some are of small size, some are of large size, some with the small internal diameter and other with the large internal diameter. Then comes to our last two components, pump and detector. The function of pump is to
मेंटेन द फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेस। जो पंप है वो मोबाइल फेस को पंप करता है, प्रेशराइज करता है कि वो कॉलम में से मूव करे। और इसका फंक्शन क्या है कि मोबाइल फेस का जो फ्लो रेट है उसे कांस्टेंट रखता है। देन कम्स द डिटेक्टर। Sorry, detector detects sample coming out of sample and give results. हमारे कॉलम से जो भी sample elute out होगा, detector will detect it and give us results in the form of chromatogram. Here you can see all the setup of size exclusion chromatography. Mobile phase है ये, mobile phase reservoir. Then come the pump, solvent delivery pump. It will pump the mobile phase. Next is the sample injector. Mobile phase यहाँ से sample को साथ लेके column में जाएगी. This is our column. And next is detector. Detector जो भी detect करेगा that will be displayed on the display unit in the form of chromatogram. This is the real setup or real apparatus, real equipment of the size exclusion chromatography. You can see this is the solvent system mobile phase. These are columns. This is the pump. From here the sample is injected. This is injector and these are our sample vials. That's all about it. Now we'll see how does it work. It works by trapping smaller molecules in the pores of adsorbent material. एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो हमारा एड्सॉर्बेंट मटेरियल है, क्या नेम है उसका, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज एंड एड्सॉर्बेंट आर alternatives. You know, in size exclusion chromatography, buffer is the alternative of mobile phase and adsorbent is alternative of stationary phase. तो क्या है इसमें, it work by trapping smaller molecules in the pores of stationary phase. जो small molecules हैं, they get trapped in the pores of stationary phase. Larger molecules simply pass by the pores because these molecules are too large to enter the pores. Larger molecules का size बड़ा होता है, so they do not enter the pores and simply pass by. Larger molecules therefore flow through the column more quickly because they do not enter the pore, so they flow through the column quickly than the smaller molecules. As a result, smaller molecules have longer retention times. It was all about the working. If the principle is clear to you, then working will also be clear to you. But if you have some doubts in the working, you need to revise the principle of this technique. There are few other names of size exclusion chromatography as well. It will be SEC. Gel filtration chromatography, gel permeation chromatography, gel chromatography, molecular sieve chromatography. There are a few more, but these are the common names of size exclusion chromatography. In the last, we will see the applications of this technique. It is used for protein fractionation, purification of proteins and biomolecules, molecular weight determination. How it can be used to determine the molecular weight? As we know, the larger molecules elute earlier. तो जो molecule column से पहले बाहर आएगा, we will have an idea that it has more weight, while the sample which is eluted later, जो बाद में later column से बाहर आएगा, that will be eluted late, it will be of lower molecular weight. Next, it is used for the separation of sugars, proteins, peptides, rubbers, and others on the basis of their size. This technique can be used to determine the quaternary structure of purified proteins. Because quaternary proteins will have larger size, they will come out first, so we can have an idea about it. Size exclusion chromatography is widely used technique for the purification and analysis of synthetic and biological polymers such as proteins, polysaccharides and nucleic acid. Basically polymer separation ही की जाती है इस technique से, either they are biomolecules or the synthetic ones. Various species of RNA and viruses have been purified using this technique with agarose gel.
That's about its application. There are many more you can find easily, but these are the common one. If you have any questions, you can ask freely, and don't forget to tell how was the lecture. Do you like it? Do you got it? Understand it? If you have any questions or any confusions or any suggestions, you're welcome in the comments. Thank you for watching.